उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन 001। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो केमिस्ट्री के पास्ट पेपर हैं उनके हवाले से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। बहुत ही अहम सवाल हैं ये और मेहनत से बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन कंबशन एनालिसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 50% ऑफ KOH। क्वेश्चन नंबर 2 है इन decolorizing process animal charcoal is boiled with ऑप्शन ए एसिडिक H2O, ऑप्शन बी है अल्कली H2O, ऑप्शन सी है हॉट वाटर, ऑप्शन डी है सब्स्टिट्यूटेबल सॉल्वेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी हॉट वाटर जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें वो ये है कि द टेम्परेचर of natural plasma is about the temperature of natural plasma is about ये ऑप्शन है 200 to 2000 C, ऑप्शन बी है 1000 CB, ऑप्शन सी है 500 C, ऑप्शन डी है 100 C। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए विच इज 20,000 C जी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल in a body centered cubic units will consist of option A is 1 particle at the end and 8 particles at the corner, option B है 1 particles at the center and 6 particles at the faces, option C है 8 particles at the center at the corner only CD, option D है 1 particle at the center only। The correct option is A which is 1 particle at the end and 8 particles at the corners। Question number 5 which of the following has sp3 hybridization, option A is pyramidal, option B is trigonal, option C is tetrahedral, option D is bent angular। The correct option है वो इसका bent angular। Question number 7 है the number of moles of solute dissolved 5 kg solvent per kg is called, option A is molality, option B is molarity, option C is mole fraction, option D is normality। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है विच इज ए मोलैलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच HCl is added to aqueous H has its ionization, A is increase, B decrease, C no effect, and D first decrease then increase, option B is decrease। ऑप्शन 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ऑप्शन बी इज सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन सी इज विस्कोसिटी, ऑप्शन डी इज pH। ऑप्शन which is correct is boiling point elevation। क्वेश्चन नंबर 10 है वो ये है कि if a strip of Cu metal if a strip of Cu metal placed in solution of FeSO4 then its correct option is D, no reaction take place। क्वेश्चन नंबर 11 है the rate expression for reaction is given as the rate is equal to K of A to B, that is order of reaction। Option correct option is B which is 3। A single polarized free radical can destroy and how many particles? A single polarized free radical can destroy how many molecules? Option B is correct which is option B 73 इनके 13। इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है which is used in making fireproof clothes, option B is correct which is borax glass। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 14
मैथ के हवाले से है और क्वान्टिटेटिव रीजनिंग में भी इसका कब जा रहा है ये। तो ये बाई चांस आ गया है, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। तो every real number is complex number with its imaginary part which is equal to, ऑप्शन सी इज करेक्ट विच इज 0। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट अकर फ्री इन नेचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट विच इज पी फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ order and corresponding element of matrices are same then matrices are said to be equal। क्वेश्चन नंबर 17 है वो ये है which type of reaction are given by alkane, and option B is correct substitution। क्वेश्चन नंबर 19 है if one root of 2 minus ax plus 6 minus plus 6 is equal to 0, द वैल्यू ऑफ ए इज, इसका तकरीबन जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 6 प्लस 2 एंड 6 प्लस 2। इसका ऑप्शन सॉल्व कर लेना है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। तो लास्ट क्वेश्चन है कार्बोनिक एसिड इज नेम ऑफ, ऑप्शन ए इज एल्डिहाइड, ऑप्शन बी इज कीटोन, ऑप्शन सी इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन डी अल्कोहल। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई बात समझ नहीं है तो ज़रूर कमेंट में पूछें, आपको जल्द ही रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, उस वक्त तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शुक्रिया।